Hello and good morning. Moi tu jamir apni asa Hornbill TV. Hornbill TV laga morning pulse te apni सबके स्वागत करे আছে। এতিয়া আগে নিউজ জনাই দিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নাগালেণ্ড ইউনিট আজি পাৰ্টি laga state head office Kohima पर press conference লৈছে। Prime Minister Narendra Modi laga leadership under PJP led union government laga 11 साल पूरा हुआ मानबले निमित्ते nationwide campaign शुरू কৰিয়া mark কৰিবলৈ। इधर कैंपेन दो विकसित भारत का अमृतकाल और सेवा गरीब कल्याण के 11 साल लगा थीम जुलाई गिना जबुले से इधर इवेंट पर सिटीजन खान के मोदी सरकार पर जा 11 साल देखी ट्रांसफॉर्मेटिव काम कुरिशे इधर जानकारी दिबुले निमित्ते से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई पैटर्न पर कुशी कि टेक्नोलॉजी पर इकोनॉमिक ग्रोथ तक इंडिया आज जल्दी आगे जाइशे। As mentioned by our chairman, I want to highlight few development activities during these 11 years of Prime Minister Narendra Modi ji. The tenure of the Modi government will be written in a golden words in the history of India. This period is becoming a golden era of the Sankalp city for develop India and self-reliant India. These 11 years of journey was not work by Prime Minister Modi ji alone, but by dedicating himself for uplifting the hard work, sacrifice, and dreams of 140 crores Indians. This era of Modi's governance has laid a strong foundation for India's future. It is as difficult to summarize this 11 years continuous journey in one speech or press conference as it is to summarize an entire life into a few pages. Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, where there is technology, there is progress. Where there is a BJP government, there is welfare for the poor. Governance is now service. The government is now participative. Good governance is now a culture. India has embarked on its Amrit Kaal towards becoming a developed nation over the past 11 years. Before 2014, the mindset was, how will this happen? It is not possible. Today's mindset is, it will happen and it must happen, because if Modi is there, it's possible. Modi government brought a politics of performance in Indian politics. Under Modi ji's leadership, the government has become responsible, accountable, reform performant, transform oriented, and participatory. Before 2014, India was plagued with corruption, scams, and appeasement politics. But today, we talk about development, innovation, and transformation. Earlier benefits from government schemes did not reach people. Middlemen swallowed the funds. Today, direct benefit transfer DBT are credited funds straight into citizens' accounts. Earlier, people feared medical expenses. Now, free treatment is available under Ayushman Bharat. Earlier, we were dependent on import. Today, we need in export due to Make India. Earlier, we were among the world's frugal economies. Today, India is on the path to become the fourth largest economy. These 11 years have been of development, trust,
and transformation. Every citizen is now witnessing and experiencing a changing India. Prime Minister Modi ji credited India's success to 150 crore citizens and says, "We believe in transformation, not revenge. Only those reach great heights who think about change, not retaliation." Under Prime Minister Modi's leadership, India is now capable of taking bold decisions and defining new normals, including decisive military response to terrorism. It is no coincidence that 11 years of Amritkal are being celebrated at a time when the world recognizes the success of Operation Sindoor. Operation Sindoor is not just a military mission, it reflects our resolve, courage, and the image of a changing India, including decisive military response to terrorism. It is no coincidence that 11 years of Amritkal are being celebrated at a time when the world recognizes the success of Operation Sindoor. Operation Sindoor is not just a military mission, it reflects our resolve, courage, and the image of a changing India. India is becoming self-reliant in the defense sector, now recognized globally as Made in India, tested in Pakistan, trusted worldwide. Under the Congress regime, from Indira to Manmohan's only slogan like Garibi Hatao, remove poverty, were given, but today data shows that over 270 million people have moved out of poverty under Modi government. Prime Minister Modi once said, "My dream is that India's poor should not remain just a number in statistics, but becomes the center of policy making." Today, the dream is visible in government schemes where the poor are the central focus, such as PM's Garib Kalyan Anna Yojana, Swachh Bharat Mission, Ujjwala Yojana, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission, PM Jan Dhan Yojana, Ayushman Bharat, PM Kisan Samman Nidhi, and many more. Under the Prime Minister Modi's leadership, 100 crore Indians are working together to make India a developed nation. Since Modi became Prime Minister, the darkness of corruption has faded and the light of good governance has spread. These 11 years have also been about reviving our ancient cultural and spiritual heritage. Significant and bold decisions taken include abrogation of Article 370 from Jammu and Kashmir, abolishing triple talaq, implementation of GST, and work bill amendment. India's foreign policy now reflects its rich cultural heritage. Looking back at these 11 years of service, good governance, and welfare of the people, it is clear that India has journeyed from darkness to light, despair to hope, and corruption to good governance.
मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है. Not just a slogan, but a ground reality. Politics is no longer about promises, but performance. Heritage and development, cultural preservation with modernization. Women are now at the center of development. That stance on terrorism, zero tolerance to terror. Defense exports increased 30 times. India is becoming self-reliant. Strike on corruption, scam ended. E-auctions ensure transparency. India is now a global leader. Monitoring of government schemes through digital tracking and social audits. Global recognition of Ayurvedic and yoga. So with these few words, I express the 11 years of our Honorable Prime Minister. Mon District Bitor Longlam Boside Aji Nutun Ang His Excellency Wangtun Wanme ke coronate Kuridiship. Wangtun Wanme kun 25 sala se Tai Longlam laga itihas te youngest Ang Hushe aro Konyak area debi youngest ekjuna se Kushe. Wangla laga Chief Ang Laiwang Hongpoi Ang Manto Lapa Ang Tinwang aro Oting Ang Tawang kan pra coronation ceremony de Kota Kushe. Pewang Konyak pra manukan ge exhort Kushe aro Pastor LBC Punlem nimide ashirwat mangi dishe. Even de bosti manu aro osor thagya bosti laga ank kanaishe. Tharavi Redevelopment Project laga Chief Executive Officer SVR Srinivas pra Tuesday Mumbai Redevelopment Nimide Project Kuya Opor Kota Kurigina Kushi ki Mumbai ge Islam Free bana bole Vijindo Dangorasi aro itu pra Maharashtra ge Islam Free Korea lagase. Tharavi Redevelopment Project to Tharavi area kundu Asia laga sobse dangor Islam ase itu ge modern integrated township bana bole koshish ase. This project is as much about providing houses as about protecting their livelihoods. Dharavi is a bubbling economy and a thriving economy. More than $1 billion of business happens there, but it's all in informal sector. Why informal? Because there are no entitlements. This project will empower and entitle the residents of Dharavi to do their businesses. They'll come into the formal sector. They'll be protected. Secondly, let us look at what are the types of businesses that are there. Dharavi is India's largest recycling machine. Okay, recycling industry. From Tamil Nadu, you get the tanneries send the leather goods, and leather manufacturing takes place here, which goes all over the country and abroad also. Third is the government sector. Government manufacturing textile sector is very much a part of this exercise. And fourth is the food industry. And fifth is the pottery. So very highly labor intensive industries are in this area. And the idea of the government is to ensure that these industries and manufacturing units and retail units and commercial establishments which are highly labor intensive are, number one, not only protected, but two, they will also be expanded so that the livelihoods are protected and employment opportunities are not only expanded but also new opportunities are generated. For that, certain concessions have been given. For instance, if an industry is resettled here, after redevelopment it comes back, they will get 5 years of state GST refund. There is a decision of the state cabinet headed by Honorable Chief Minister. So these such major important decisions have been taken, and it is also declared, as I said, the vital public purpose project. So while there will be disturbance during the process, I cannot say it will be all hunky-dory, and I also don't say it is the most perfect project ever. But best cannot be enemy of the good. So whatever is happening, certain course corrections can be done if necessary. However, the idea is to protect the livelihoods, and there can be no compromise on that. Sir, Dharavi business are most vociferous and in their opposition to DRP. What the efforts of DRP making to ensure that
are make care of? What do you have to say, sir? See this, it is wrong to say that in the first place that the residents of Dharavi are opposed to this project. One should look at the data. So, almost about 100,000 units, whether they're families or commercial structures or industries, have been mapped. More than 80,000, near about 85,000 have been numbered, and similar number is number of families and industries which have been documented. So, as far as this process of onboarding the people is concerned, it has crossed the Rubicon. The project has taken off. And secondly, as we speak, the construction has also started, which is a very good thing. And the idea is to ensure that within about 7 years, it may take a little more. Within 7 years, you have to complete the project of rehabilitation, right? Which is a humongous task. So these are the broad parameters. But the concerns are very genuine, given the track record of this project, which I have mentioned. It has not happened for the last 4 decades, but now the work has started. As I look at it, the most important part of this project is number 1, housing for all, which we are giving. Number 2, in fact more importantly, have to ensure that the livelihoods are protected. It is more of a livelihoods issue, this project. And I call this project a movement, because such a project has never ever taken place in our redevelopment history or urban history anywhere in India. So, how to ensure that? For that, we have given the government, the government has given certain benefits to the project and special concessions. The most important being it has been declared as a vital public purpose project, which is very important. And all the permissions have to be given as early as possible to ensure that there is no delay. Second is, which is very interesting, will be, as far as possible, most of the people or residents of Dharavi will be shifted directly to their homes. The idea is to minimize as much as possible the possibility of having them in transit accommodation. So, effort is to minimize the transit accommodation. Okay. So, that is another thing which is very, very important. कांग्रेस एमपी दीपेंद्र सिंह हुदा प्राजा कली ट्यूसडे दे खुशी की जा 11 साल दे हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट लोगो दे प्रादांगो प्रोजेक्ट एकता भी पानाय ताई खुशी के हरियाणा दे सबसे बेसी अनएम्प्लॉयड मानु आसे ड्रग एडिक्शन आसे इलीगल माइग्रेंट्स कान आसे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आसे यूपीए गवर्नमेंट पर आनिया स्कीम्स कान भी सब बाहर लोई जाय आसे खुशी। देखिए, जहाँ तक आपने जो 11 साल की बात करी, एक और बात उसमें देखनी चाहिए। बाकी तो क्या कहते हैं, उनका तो टाइम पास है, वो आप देखते ही हो क्या कहते हो तो हर रोज। लेकिन इन 11 साल में केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या मिला? केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या कोई बड़ी परियोजना मिली, नहीं मिली, ये देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए आज 11 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा डंकी के रास्ते विदेश में जाने वाले युवाओं में नंबर हरियाणा का, कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा चौपट आज हरियाणा में। एक कोई केंद्र सरकार से कोई बड़ी रेल परियोजना, कोई बड़ी मेट्रो परियोजना हरियाणा को नहीं दिलवा पाए 11 साल में। छोटा समय नहीं होता 11 साल। 1 इंच मेट्रो को आगे नहीं बढ़वा पाए 11 साल में। कोई पैसेंजर, कोई एक नई लाइन 11 साल में नहीं बनवा पाए हरियाणा के अंदर। कोई एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं लगवा पाए, ना थर्मल का प्रोजेक्ट लगवा पाए, परमाणु वाला फतेहाबाद वाला आज तक उसको कमीशन नहीं करा पाए।
ना कोई एक बहुत बड़ी नई केंद्र सरकार के माध्यम से कोई शिक्षा का कोई बड़ा कोई संस्थान या यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर ये स्थापित करा पाए। तो 11 साल, बल्कि हरियाणा में जो प्रोजेक्ट हमारे समय मंजूर हुए थे, इन 11 साल में वो प्रोजेक्ट एक एक करके हरियाणा से बाहर चले गए। एयरपोर्ट जब ये मंजूर हुए थे हिसार, करनाल और महम के अंदर, महम जो जहाँ पे 3 जिलों के सेंटर में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट महम में, करनाल के एयरपोर्ट का अभी तक जिक्र नहीं, हिसार में एयरपोर्ट पूरा कराया नहीं, और महम का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो जेवर में। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना के अंदर मंजूर हुई थी, जींद और गोहाना के बीच में, वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई बनारस में। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा एम्स में जहां बना, वहां 11 नेशनल इंस्टीट्यूट बनने थे, जिसमें से मात्र नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट बना, जो सारे हमारे समय में यूपीए की कैबिनेट ने मंजूर किए थे। तो एक एक करके जो परियोजनाएं मंजूर हमारे समय हुई थी वो हरियाणा से बाहर जाती रही, और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, इनके केंद्र में इनके सांसद, मंत्री, किसी ने चू तक भी नहीं करी और नहीं कोई परियोजना आई नहीं। और केंद्र सरकार की तरफ से इतना सौतेला व्यवहार हरियाणा के साथ इन 11 साल में हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। खेल बजट, देश में सबसे कम खेल बजट अगर कहीं मिला तो हरियाणा में। जितना हमसे लिया जाता है जीएसटी में, उसके अनुपात में देश में सबसे कम केंद्रीय बजट में अगर हिस्सेदारी मिल रही है आज किसी एक प्रदेश को, वो हरियाणा प्रदेश को मिल रही है। तो केंद्र की तरफ से तो इतना सौतेला व्यवहार। अब आपने देखा पीछे पानी की जब बात आई तो जो भाखड़ा का पानी हमेशा सदा मिलता आया, भाखड़ा के पानी पे तो कभी विवाद ही नहीं हुआ, वो भाखड़ा का पानी भी पंजाब ने बाधित कर दिया, और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही, हमें अपने हक का पानी नहीं दिलवा पाई। तो हरियाणा के केवल नौजवानों से उसकी रोजगार का हक जो एचपीएससी में मारा जा रहा है, ज्यादातर नौजवान बाहर के लग रहे हैं। इन 11 साल में मुख्यमंत्री जवाब दें, एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1, क्लास 2 में 75-80% हरियाणा के बाहर के नौजवान क्यों हैं? हरियाणा का नौजवान कहां जाएगा? कोई दूसरी प्रदेश लगा रहा है हरियाणा के नौजवान? तो वहां हरियाणा के नौजवान का हक मारा गया। केवल वहीं तक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का हक पे चौतरफा वार करने वाली ये डबल इंजन सरकार है। इंजन 2 हैं, लेकिन हरियाणा वासियों के हक पे चारों तरफ से हक को छीनने वाली ये सरकार साबित हुई है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आप यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल प्राजा कली खुशी कि इंडिया दो स्विट्जरलैंड लोगों ट्रेड करबले अपॉर्चुनिटीज पिछे से स्विट्जरलैंड लगा बिजनेस कम्युनिटी खान लोगों खोता कोया पिछे ताई खुशी कि बिजनेस लीडर्स पिछे इंडिया लगा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एप्रिशिएट करिए से स्विट्जरलैंड और EFTA कंट्री लोगों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना पिछले इंडिया पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट भी पाना बोले कोशिश करिया खुशी। Friends, I bring with me a story of a country that in the last 30 years has grown from a $270 billion economy to a $4 trillion economy today, but which in the next 22 years, as we work towards celebrating 100 years of India's independence, aspires to grow from a $4 trillion economy to a 30, maybe $35 trillion economy. That's the largest ever economic opportunity that has ever presented itself in human history. A country with 1.4 billion young, talented dreamers. Our average age is only 28.4 years. For the next 30 years, India will continue to be a young country. This talent, this skill set
This desire for a better future is what drives India as the fastest growing large economy in the world today. अच्छी चर्चा हुई है आज स्विट्जरलैंड के उद्योग जगत के साथ। कई सारे विषय भी उन्होंने साझा किए और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने भारत में बदलाव किया है, जिस प्रकार से तेज गति से विकास हुआ है, उसकी भी सराहना की गई कई उद्योग के बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों द्वारा। जिस प्रकार से भारत में आज उनको बड़े अवसर दिखते हैं, उसकी चर्चा हुई। कुछ विषय ऐसे भी सामने आए जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। एक बड़ा ज्वलंत विषय जिसका एक अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है और ये एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है, उसमें से आगे चलकर हम आपसी संबंध और सुधारने के लिए म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट के माध्यम से भारत की कंपनियों को जब स्विट्जरलैंड में या नॉर्वे, लिechtenstein या आइसलैंड में कुछ सामान बेचना हो तो भारत में ही उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो जाए और स्विस कंपनीज को अगर कुछ भारत में देना हो तो स्विट्जरलैंड में ही उनका रेगुलेटरी अप्रूवल हो जाए। ऐसा एक दो तरफा द्विपक्षीय समझौता जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़े, अलग अलग नई टेक्नोलॉजीज भारत में आ सके, इस दिशा में भी स्विट्जरलैंड की सरकार और भारत की सरकार आगे बढ़ रही है। इतिहास करने मान है साइड हॉर्नबिल टीवी।